Hello all, I am here for the discussion of model answer of paper science and technology part 2 round 2. So let us begin with question number 1. It is find odd man out, and as usual there are 4 words given, and from these 4 words you need to pick up one odd word. Whichever word you choose here, you should be able to write down the correct explanation for that, even though it is not asked here. It will be always better if you mention the reasoning why that particular word is odd. So diabetes, anemia, leukemia, thalassemia. So odd is diabetes. Answer is diabetes here. And let us see what the reasoning is given here. Cell therapy is used to replace dead cell in diabetes, whereas it is used to produce blood cells in other diseases. All other diseases involve blood cells, whereas diabetes involves insulin and blood sugar. That means anemia, leukemia, thalassemia. These are the disorders of related to blood. Simply you can write it in this way. Anemia, leukemia, and thalassemia. These are the disorders related with blood. Whereas diabetes is a metabolic disorder. This way also you can write. Cell therapy is used to replace the dead cells. In case of anemia also, in fact, cell therapy can be used. In case of leukemia also it can be used, because cancer मध्ये पण असते अशा प्रकारची ट्रीटमेंट. So I would suggest diabetes is odd. Apart from this reasoning, the better reasoning will be anemia, leukemia, thalassemia are the disorders related with blood, whereas diabetes is the disorder that is related with, it's a metabolic disorder, right? Which of the following is not an organic manure? So we understand what is meant by organic manure, right? We understand. Organic manure is the one which comes from the organic source. So green manure, vermicompost, oil cakes, and urea. So very easy to identify here, because other three, they can be very easily traced out as an organic source. Urea is a nitrogen fertilizer which is synthesized in, which is manufactured in the factory. So that is not an organic manure. Now, next is rewrite the following statement after correction. That means the statement is false and you need to rewrite it. काय statement आहे बघूया. The gene from Bacillus thuringiensis is introduced into soybean. And the corrected statement is gene from Bacillus thuringiensis is introduced into brinjal. So instead of इथे correction आहे म्हणजे soybean, instead of soybean, the corrected word is brinjal. Corrected word can even be cotton, because BT cotton you have heard of. So what is BT? It is nothing but the short form for Bacillus thuringiensis. And we have already learned it during our first track course, that how this kind of plants are manufactured in which their gene is altered. So instead of brinjal, even you can write the cotton. Then complete the following table. It's answer directly बघूया. Complete the table मध्ये कसं असतं. The blanks are provided and you are supposed to fill those blanks after understanding the given things. What is given in the answer, its correlationship with the words that are given there, you should be able to fill this word properly here. So Pteris vittata and Pseudomonas, and their functions are asked. Here the functions are given and the related organisms are asked. So I will suggest you that this is a bit, a kind of thing which students don't like to learn and they don't find any interest in it. I can very well understand this. So better you learn the things by heart, because it is necessary for the exam point of view. These words and names are slightly tongue twisting, and I think they are difficult for you to memorize. त्याला learn करावं लागतं. Let us see function काय आहे. Pteris vittata, absorption of arsenic from the soil. For that purpose, this fern called as Pteris vittata is used. And Pseudomonas, the function is cleaning hydrocarbons and all pollutants from the soil and water.
Pseudomonas aeruginosa is the organism which have already been used for cleaning of the oil spills or the oil spillage that accumulates on the surface of ocean while carrying the oil from the boats, from the ships. Already mentioned in your book. Sunflower has the property of absorption of uranium and arsenic. इथे तुम्हाला sunflower fill करायचंय. And easy. Even terrace vitata is easy. Pseudomonas must be easy. This word generally becomes difficult for students to remember because it is a name of a bacteria which you never have heard before. Let's see what the function is performed by that. Absorption of radiations. So if you look at this word, radiations, its name is hidden in this word, the name of this particular organism. I am giving you the hint with the help of which you will be able to memorize those words very easy. So see, त्याच्या नावात सुद्धा उसके नाम भी यही है, रेडियो ड्यूरॅन्स. हा शब्द कसा आलेला आहे? रेडियो मीन्स रेडिएशंस एंड ड्यूरॅन्स जाने की जिसके पास रेडिएशन का एंड्योरेंस है, जो रेडिएशन को टॉलरेट करता है यानी कि इनफैक्ट यूज करता है फॉर इट्स ओन न्यूट्रिशन. Why these things are absorbed? It's a nuclear waste. It is harmful. We know that nuclear waste is harmful for human system, but these organisms are friendly with them because these things they can absorb and they can use for their own purpose, for their own nutrition. So जो radiation को endure कर सकता है वो है Deinococcus radiodurans. Remember this name, memorize it. And I'm sure you'll be able to easily write its name in your coming exams. A short note on the process shown in the following picture. देख के तो पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेनिक पोटैटो का फॉर्मेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाए जाते हैं. Let us see the points that are being discussed here. The given figure shows the preparation of transgenic potatoes. ये तो लिखना ही है. Which act as edible vaccine. कितने मार्क्स है इसको? उसको 2 मार्क्स है, यानी कि 4 पॉइंट्स तो होने चाहिए. In case of objective, deliberately I did not look at the marks because it is but understood that each objective carries 1 mark. But for brief answers, we need to find out the relation between the marks given and the number of points expected. So given figure shows preparation of transgenic potatoes. These potatoes will act against bacteria like Vibrio cholerae and Escherichia coli. ये तो लर्न करना ही पड़ेगा. Vibrio cholerae 8th क्लास से पढ़ते आए हो. E. coli, Escherichia coli के जगह आप सिर्फ E. coli मेंशन कर सकते हो, जैसे नीचे दिया हुआ है देखो. So consumption of these raw potatoes generate immunity against cholera and disease caused due to it. ये एक edible vaccine है, यानी कि जिसको आप खा सकते हो. Whereas other vaccines have to be injected, this vaccine can be consumed. And the steps involved in the production of potatoes, such kind of potatoes are. So इसके लिए जो steps है उसमें शायद से आधे मार्क जाएंगे. The desired gene is isolated from the human pathogen and transferred to the plant virus. ये प्रोसेस पहले इसमें बताया गया, अभी ये तो एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं करूंगी. I will simply mention कौन से steps यहाँ पे लिखना जरूरी है. Transgenic virus infects the pieces of potato leaves. यानी कि पहले desired gene isolate करना है and plant virus में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वही वायरस आगे जाके वो पोटैटोज की तरफ लेके जाएगा ना. उसके जीन को पोटैटो में इंट्रोड्यूस अगर करना है तो प्लांट सेल में जाने के लिए कुछ तो व्हीकल चाहिए, कुछ तो चाहिए. वो प्लांट जीन में हम मैन्युअली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये बहुत बच्चों को मालूम नहीं रहती कि मैन्युअली प्लांट जीन में हम नहीं डाल सकते हाथ से कोई भी जीन. तो वो कैरी करने वाला है ये वायरस, इसलिए उसको सबसे पहले वायरस में इन्फेक्ट करना पड़ेगा जो पोटैटो लीव्स को इन्फेक्ट करेंगे इन टर्न. सो न्यू पोटैटो प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पोटैटो लीव्स कंटेनिंग द जीन ऑफ यू. और ये जो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पोटैटो में डिसीज दे रहे हैं, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स कैन रेज दिस क्वेश्चन कि आर वी इन्फेक्टिंग द पोटैटो प्लांट बिकॉज वी आर गिविंग वायरस. अभी तो वायरस का फिलहाल बहुत चल रहा है, तो इसलिए मैं बताऊंगी कि ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट वायरस रहते हैं. डिसीज कॉजिंग प्लांट वायरस नहीं होगा, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेबोरेटरी यूज वाले वायरस रहेंगे जिसमें
इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो जो डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया था हमने, वो डिजायर्ड जीन क्या होता है, वो डेफिनेटली विब्रियो कॉलरी एंड इकोलाई के अगेंस्ट काम करने वाला कोई एंटीबॉडी बनाने वाला जीन है। सो कंजम्पशन ऑफ सच रॉ पोटैटो गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। इतना सारा आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन कैन कम फॉर 5 मार्क्स। So explain in brief the DNA fingerprinting. Give 2 examples where this technique is used. So 1 mark will be for brief explanation के लिए, and 2 examples के लिए 2 marks. ऐसे करके इसमें 3 marks जाएंगे. So DNA sequence of each person is unique as that of the fingerprints. Due to this, the identity of person can be established with the help of any available sample of person's DNA, and this is called as DNA fingerprint. 1 mark. सबको पता है आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोई नई चीज नहीं। सो यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे होता है? तो क्रिमिनल आइडेंटिटी, किसी की एस्टेब्लिश क्राइम हो गया है तो फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल, इफ एनी पार्ट ऑफ द पर्सन's बॉडी इज फाउंड, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आई वुड सजेस्ट any trace that has been left behind by the criminal's body is useful. Even a single hair is useful, or a saliva, drop of saliva, or even a drop of blood or a semen is very much useful for fingerprinting. Identity of father disputed, अगर कोई किसी की है आइडेंटिटी, उसमें बहुत सारे केसेस हुए एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को ये एक्सक्यूज मी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन the organic farming. Now this question is of 5 marks, so definitely you can see that there are 5 marks given over. One by one एक एक पॉइंट को एक एक मार्क्स यहाँ पे जाएंगे। Organic farming involve the use of organisms, microorganisms for various processes in farming. Biopesticides replace chemical pesticides which can be harmful to the soil as well as plants. Let me first of all read all the points, then I will give my final comment. Bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into the plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, insects do not consume the plants. Drawback of biomagnification of chemical pesticide is eliminated by the use of biopesticide. Okay, I have read the points now. Let me pass my final comment on this. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, अगर इसमें आपको देखना है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच देयर इज ए मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड्स और इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये पहली चीज आपको दिखनी है, देयर इज अ मिनिमम यूज ऑफ एनी केमिकल और एनी पेस्टिसाइड। देन व्हाट इज यूज्ड? सो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मे बी microorganisms or maybe other organisms, and also it involves use of manures, green manures instead of chemical fertilizers. Pesticides, जर तुम्हाला मी सांगितलं की replace pesticides because they are harmful to soil. Bacterial and fungal toxins can destroy the pests and pathogens, can be directly integrated into the plants. आता वरती आपण बघितलं ना की a gene was directly introduced into the plant and the potatoes they acted as a vaccine, just like that. किंवा तुम्हाला बीटी माहितीच आहे, वरती फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही बघितलं फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये। सो बैक्टीरियल वो क्या था, बैक्टीरियल टॉक्सिन बनाने वाला ही जीन है ना, वो बैसिलस thuringiensis. So this is a practice introducing such kind of fungal gene that is producing toxins or that is producing antibody, any chemical that can be introduced or integrated into the plants with the help of biotechnology. Insects, bioinsecticide जो है या बायोपेस्टिसाइड, ये जो रहता है ये टॉक्सिक होता है इंसेक्ट्स के लिए, तो वो इंसेक्ट प्लांट्स को नहीं खाते हैं, ऐसा एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड का बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, ये एडवांटेज है। This can be eliminated by the use of biopesticide. तो बायोमैग्निफिकेशन यानी बहुत सीधी चीज है। मैग्निफिकेशन अगर आपको मालूम ही नहीं है तो you will not be able to use this word in your answer. बायोमैग्निफिकेशन यानी सिंपल चीज है। आप अगर कोई फूड चेन ले लो,
जैसे आप एनवायरमेंटल में पढ़ रहे हो फूड चेन फिलहाल, पैडी क्रॉप, देन ग्रास हॉपर, देन frogs, then snake, and then eagle. So if the crop has been sprayed with some chemical pesticide, then what will happen? तो grasshopper उसी पैडी क्रॉप को खा रहे हैं जिसमें वो पेस्टिसाइड हमने स्प्रे किया है. So that pesticide will enter into the bodies of grasshopper. लेकिन खाने वाला जो है फ्रॉग ऐसे एक ग्रास हॉपर नहीं खाएगा, उसको तो दिन में मानो 10 ग्रास हॉपर चाहिए. तो यानी उसको 10 टाइम्स 10 गुना उसके बॉडी में वो पेस्टिसाइड चला गया. सो जो खाने वाला, उसको खाने वाला जो फ्रॉग को खाने, ग्रास हॉपर को खाने वाले जो फ्रॉग है, या आई मीन दोज विच आर नाउ फीडिंग ऑन द फ्रॉग्स, स्नेक्स, उसको तो दिन में चाहे 3 या 4 वो खा लेगा ऐसे फ्रॉग्स, तो मात्रा बढ़ गई. और जो ईगल है उसको भी 4 सांप चाहिए, उसको उसके बॉडी में और 4 गुना 3 गुना, इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोला. सो ये केमिकल पेस्टिसाइड में जरूर होता है, वो कि बहुत डेंजरस है इकोसिस्टम के लिए. तो ये ड्रॉबैक नहीं रहता है व्हेन यू आर यूजिंग द बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड इंस्टेड ऑफ chemical pesticides. So much more is there for discussing the, I have discussed but all the points regarding this, and definitely you can write any good 4-5 points of your choice. Okay, with this I would like to come to the end of this round 2 of paper science and technology, and I wish you luck for all your exams, next exams. Best of luck and see you next time.